Hello all, welcome back to Real Homemaking. Look who I have with me today again, my mom. Namaste. Today we thought of having some fun, so this video is not about cleaning, cooking or any kind of vlog. As you can see, we have exchanged our attires. हम लोगों ने पूरा वैसे ड्रेसअप किया है जैसे हम एक दूसरा ड्रेसअप होते हैं. Like I am wearing my mom's beautiful sari and my mom's bangles and dressed up like the way my mom dress up. And पूरा hair style भी हम लोगों ने वही पूरा बनाया है. You will always find my mom with a ponytail, so I am having my ponytail today. And my mom is wearing my clothes, my jeans and top, and she has dressed up the way I dress up. Like she's wearing watch and उनके हेयर स्टाइल भी ऐसा है जैसा मैं अक्सर बनाती हूँ. So in this video we will do each other's makeup. I will do my mom's makeup the way I do my makeup, and she will do my makeup the way she does her makeup. So I'm really enjoying filming this video with her. So and I hope you will also enjoy watching this video. So mom, are you excited? Yes. So yeah, with this let's begin. मम्मी पहले आप मेरा मेकअप करोगी या आपका पहले मैं करूँ? बेटा पहले आप मेरा करो. पहले आपका करूँ. चलो पहले मम्मी का मेकअप करते हैं. So I hope I do a good job. Let's see. मम्मी, हम लोगों ने सारा सामान यहाँ पे सेटअप किया हुआ है और मम्मी के लिए एक छोटा सा मिरर भी ला रखा है जिससे कि मम्मी देखती रहे. उन्हें कभी भी कुछ और लगेगा तो I'll tone down that thing. So yeah, with this let's begin. मम्मी आपका ये है मिरर, आप देखते रहना. आपको कुछ भी अजीब लगे या कुछ भी ऐसा लगे तो मुझे बता देना. I'll tone down that, okay? So सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर, बिकॉज मैं जब भी अपना मेकअप करती हूँ तो प्राइमर ज़रूर लगाती हूँ. दिस वन इज फ्रॉम लॉरियल. So after primer we are applying this BB cream. As I don't like heavy makeup on myself, I never use foundation, so मैं भी BB cream लगाती हूँ and I am applying the same BB cream to my mom. So after foundation, I am applying the powder to set up the base. These are all the makeup steps that I follow on myself. एक बार आप मिरर में देखो, हेवी तो नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा? I'm glad she's liking it. So once the base is done, I am filling her eyebrows very lightly. I'll fill her eyebrows. So once the eyebrows are done, now we are starting with our eye makeup. So here I have this Huda Beauty रोज गोल्ड पैलेट एंड इसमें से मैं जो मेरे फेवरेट शेड्स हैं वो मैं आज मम्मी पे लगाऊंगी. आई नो दिस इज योर फेवरेट कलर. यू वांट वेरी लाइट शेड, राइट? As it's a casual day makeup, I am just applying a single color on her eyelid. Once the eyeshadow is done, I am applying kajal and eyeliner with the same kajal. This is Maybelline's Eye Studio. So we are done with the eye makeup. We have kept it really simple because मेरी मॉम बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, तो एकदम से उनको बहुत ज़्यादा मैं मेकअप करके परेशान नहीं करना चाहती. एंड उसके बाद हम लगाएंगे ब्लशर. ये है मैक का चीकी बिट्स.
Mama smile. So blusher is also done and now it's time to apply some lipstick and this is it. यही मैं भी मेकअप करती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती. So बस यही सिंपल सा मेकअप है. बस अब मैं लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ. मम्मी आपको ये वाला शेड पसंद है पिंक? हाँ, लगा दूँ? लगा. कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर. एक बार सबको दिखाओ अपना मेकअप. So this is how I dressed up my mom. And now it's time for my mom to do my makeup. Are you ready? रेडी. चलो करो मेरा मेकअप. मैं बहुत ज्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, बस बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर और काजल यही लगाती हूँ. यही अपनी बेटी के लगाने जा रही हूँ आज. ठीक है, आप लगाओ. सबसे पहले आप क्या लगा रहे हो? सिंदूर. My mom loves red color सिंदूर, तो आज उन्होंने मुझे वही वाला लगाया है. And she applies a bigger bindi. मम्मी मैं इतनी बड़ी बिंदी कभी भी नहीं लगाती, बट अच्छी लग रही है. And now she is applying काजल. मेरी मॉम बहुत ही लाइट काजल लगाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी आंख में बहुत ही लाइट काजल लगा हुआ है आज. And now it's time for the lipstick. मेरा मेकअप बहुत ही सिंपल था. मेरी मॉम बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हैं, सो उनका मेकअप 2 मिनट में खत्म हो गया. मैं पहले अब खुद देखने से पहले आप सबको दिखाना चाहती हूँ. यही लाइट सा मेकअप मेरी मॉम करती हैं अपना. So yeah friends, this was a fun video today. We really enjoyed filming this video. जैसा कि आप सब जानते हो मुझे अपनी मम्मा के साथ वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. एंड शी इज़ हियर फॉर 4-5 more days. तो मैं ट्राई कर रही हूँ जितनी भी वीडियोस उनके साथ मैं बना पाऊँ. आज हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ये वीडियो को बनाते वक्त. अगर आप लोग भी ऐसा फन अपनी डॉटर्स के साथ करना चाहें तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या अगर आपने कोई फन ट्रिक की हुई है अपनी मदर या डॉटर के साथ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to our channel. Please do subscribe, it really means a lot to us. And you can also follow us on Facebook and Instagram, and we'll see you super soon with our new video. Till then, take care. Bye.